मेरा नाम ज्योति प्रकाश, मैं टॉक टू मी का ट्रस्टी हूँ। एंड आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के वाले दिन मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ जो आप टॉक टू मी और सेंटा क्रूज के प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें होती है, तो इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर किस तरह का इनिशिएटिव? देखिए, अगर आप देखा जाए तो हमें देश को आज़ादी तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई, लेकिन उसके बाद अगर ये चीज़ देखा जाए कि अगर आज के दिन मुंबई के अंदर अगर हम सुरक्षित हैं और खुश हैं, उसमें हमारी पुलिस कर्मचारियों का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। मेंटल हेल्थ को लेके हम लोग ने जो ये एक विषय आगे बढ़ाया है, जो उनकी मेंटल वेलनेस के बारे में बढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये पुलिस वाले एक ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस समाज में पीड़ित हैं। वो हमें खुश करने के लिए हमेशा अपनी जान को आगे करते हैं। अपने जितने भी आप विषय देख लीजिए, आप जितने भी त्यौहार देख लीजिए, उन सब में वो अपने परिवार के साथ शामिल नहीं रहते हैं। उनका परिवार एक बहुत ही कठिन घड़ी से गुजरता है, क्योंकि उनके घर वाले उनके साथ कभी भी नहीं रहते हैं। सो मेंटल हेल्थ के अंतर्गत हम लोग ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि उनकी वेलनेस रहेगी, वो खुश रहेंगे, उनका परिवार खुश रहेगा, तभी हम लोग खुश रहेंगे। I am Willie DeMello, called. I'm a management consultant. I'm also with Talk to Me. They're doing some very good work, and they're all for mental health. A lot of problems all over. Not only the police force, but in general, whether you're young, you're old, everybody has problems. Everybody has mental health problems. So those problems is taken care of by Talk to Me. Now, this is Mr. Singh, who's the senior trustee of Talk to Me, and this is Mrs. Divekar, Advocate Divekar, who is also a trustee of Talk to Me. There's a board of trustees. It's a new organization established 3-4 years back, and I pray and I hope that this organization really flourishes. It is already flourishing, and people are coming to know about it more and more. So thank you for your support, especially the media. Thank you very much. Ma'am, how much is it important to, first of all, introduce yourself, and how much is it important to look into police officers' culture? जैसे सर ने कहा कि they never be with their families and they never celebrate any festivals. What do you want to say? नमस्कार, मी डॉक्टर पल्लवी दिवेकर, टॉक टू मी NGOची मी पण विश्वस्त आहे सरांबरोबर. हे जो प्रोजेक्ट आम्ही इकडे केलेला आहे त्याच्याबद्दल मी 2 शब्द तुम्हाला सांगते. हे सँटिग्रूज पोलीस स्टेशन आपलं जे आहे त्याच्यामध्ये साधारण 200 पोलीस असतील. तर हे पोलीस रोज बाहेर जातात, त्यांच्याकडे एवढ्या समस्या आहेत जे आपल्या सिटिझनच्या समस्या सॉल्व्ह करतात, त्यांच्या स्वतःकडे केवढ्या समस्या आहेत. तर आम्ही जुलै महिन्यामध्ये एक कॅम्प इकडे आयोजित केली होती टॉक टू मीने. त्याच्यामध्ये आम्ही इंडिव्हिज्युअल पोलीस जे पोलीसमॅन होते त्यांचे इंटरव्ह्यू घेतले आणि त्यांच्या काय समस्या आहेत, त्यांच्या फॅमिलीजच्या काय समस्या आहेत हे आम्ही समजण्याचा प्रयत्न केला. कारण आधी कुठचाही प्रॉब्लेम आधी समजल्याशिवाय पुढे त्याच्यावर सोल्युशन काढता येत नाही. तर असं आम्ही इंटरव्ह्यूज कंडक्ट केले आणि त्याच्यातून आम्हाला जो डेटा मिळाला आहे त्याच्यातून आम्ही काउन्सिलिंग केलं. बरेचसे असे सदस्य इकडे पोलिसमॅन होते, त्यांना त्यांच्या फॅमिली लेवलवर त्यांचे प्रॉब्लेम्स होते आणि एवढे डे टू डे असे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवता स्वतःच्या फॅमिलीवर ते सगळे प्रॉब्लेम्स येत असतात. ते आम्ही ट्राय केले आणि आता अजून आमचा प्रोसेस चालू आहे, अजून संपला नाही. आणि आम्हाला हे टॉक टू मीचं जे इनिशिएटिव्ह आहे आम्हाला प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जायचं आहे. त्यामुळे कोणाशी जर आम्हाला कोणाचं सहाय्य मिळालं, कोणी जर पुढे येऊन आम्हाला मदत केली तर आम्ही खूप आभारी असतो. थँक्यू. Sir, any message you would like to give to audience? मैसेज फॉर द ऑडियंस फॉर टॉक टू मी, आई वुड से, या प्रॉब्ली मैं आज तो पुलिस वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगा दैट पुलिस पीपल, बॉम्बे पुलिस इज़ नॉट हियर टू गेट applauded it, but it has been get recognized. So we are here to definitely recognize their effort. उन्होंने जो एफर्ट डाला है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हैं. वो एक कॉज के लिए हैं, वो applaud के लिए नहीं है. This is the message what I would like to give it for the Bombay police. Thank you so much. What do you want to say about mental health, which is very important to police life? They never be with family, they never celebrate any festival. What do you want to say about that? Right. So I'll just introduce by introducing myself. My name is Divya Mirani, and I'm a psychologist associated with Talk to Me Mental Health NGO.
Sharmishta Parkar, and I am a counselor working with Talk to Me Mental Health NGO. So talking about mental health in general and especially for the police, Talk to Me was introduced as a concept by our founder trustee Mr. Narendra Kingar with the aim of bridging the gap between mental health services that are required for people and services that are available. So what we mean by bridging the gap is that we have a pay-as-you-can model which we follow so that finances or remuneration per se does not become a hindrance for stopping people to seek the help that they need. There's a lot of stigma and awareness that is needed in mental health, especially in a country like India where people hesitate to talk about their problems. So this project that we are highlighting today, it was done with the police personnel at Santa Cruz Police Station. We have interviewed various personnel at the station and identified what problems they may be suffering, and as per the pandemic, data has suggested that there is a rise in cases with depression, anxiety, loneliness and stress, not only in one community but throughout the spectrum. We are doing our part to target those populations and help the causes that they may suffer from, and doing our bit to help them in whatever case we can. While doing this project, one thing that does come while doing this project, one thing that we have to understand and realize is that police officers go through a lot to save all of us, to go, and especially during the pandemic, as well as their family members. So it's not just them who is dealing with a lot, it's also the family members at the back end who are dealing with a lot. So to ensure that their mental health is doing fine, we had started this project and we are providing the services not just to them as well as the family members. So Talk to Me NGO हमने establish किया था. It's in Mahim, Mumbai. Talk to Me establish हुआ था इस एम के साथ कि हम लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें सभी के लिए जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग टू देयर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस. वी हैव अ यूनिक मॉडल कॉल्ड एज पे एज यू कैन मॉडल, जो हाईलाइट करता है कि आप जितना भी हमारी सर्विसेज के लिए पे कर सके आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप वो करें, एंड हमारे डोर्स आपके लिए हमेशा ओपन है. कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो या कोई भी मेंटल हेल्थ चीज़ जिससे आपको परेशानी हो रही हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या भले ही वर्क स्ट्रेस, आप हमारे पास आइए. हम जितनी भी आपकी मदद कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे. हमारा ऑफिस माहिम में है. You can reach out to us on our Instagram page as well. It's called talktome.ngo. We have built Talk to Me with the aim that we are here, we are listening, and we are ready to help you in any emotional problem in any capacity that we can. Thank you.